हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कंटिन्यू करते हैं Q1 FY26 का जो अर्निंग सीजन चल पड़ा है उसका उसका कंटिन्यूशन आगे करते हैं। तो इसमें अभी एडिशन हो गई है दो कंपनीज की, जिसमें ये हाउस अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस जो सेक्टर है उसमें आई थिंक होम फर्स्ट फाइनेंस एंड आधार हाउसिंग इनके रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो हमने पहले इसमें डाला हुआ था बजाज हाउसिंग फाइनेंस और आई थिंक हमने कैनफिन होम्स डाला हुआ था। तो इफ यू कंपेयर दिस राइट नाउ, क्या पिक्चर है, क्या लैंडस्केप चेंज हो रहा है, तो वो थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे। सो इफ यू लुक हियर, बजाज हाउसिंग फाइनेंस हैज ग्रोन इट्स AUM बाय ऑलमोस्ट 24%। बट अगर आप देखोगे यहाँ पे होम फर्स्ट के रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो होम फर्स्ट इज यूज टू ग्रो द AUM एट 31% तक ग्रो करता था FY25 में, लेकिन Q1 में इसने जो अपडेट दिया है दैट इज दे इसमें AUM की ग्रोथ में स्लाइट डिक्लाइन तो आ ही गया है 28% का। यहाँ पे ये लोग बता रहे हैं कि AUM इन्होंने ग्रो किया है विच इज लाइक 13,478 करोड़ का AUM है। तो डिसबर्समेंट का जो रेट है उसमें भी यहाँ पे गिरावट है। अगर आप लास्ट ईयर सेम क्वार्टर देखोगे तो इट वाज लाइक 29% का ग्रोथ था, but in this quarter it is like only 7% growth they have posted. So some concern is there definitely here in the home first finance. If you look at the ROE trend, which is also slightly declining, तो 16% हुआ करता था FY25 में, in Q1 it is slightly declined to 14.9% or 15% you can consider. ROA slightly increased, 3.5 to 3.7%. GNPA slightly increased 1.7 to 1.8% because of जो 1+ DPD और द आई थिंक 30+ DPDs जो है, डेज पास ड्यू, वहां पे थोड़ा एसेट क्वालिटी इनका खराब हुआ है। तो ऑलमोस्ट लाइक 5% इन 1+DPD एंड 3.5% इन 30+DPD, एंड बिकॉज ऑफ दैट we are saying this slight increase in the GNPA here. So this is one indication. Another thing is that they have guided like 27 to 30% का ग्रोथ ये लोग करेंगे। तो इन लाइन विद दैट गाइडेंस उसका जो ग्रोथ रेट है वो सही है, 28% ही है। सो दैट इज वन। द अदर रिजल्ट इज आधार हाउसिंग फाइनेंस। तो उसमें अगर आप देखोगे तो द दे हैव गाइडेड लाइक 20 to 24% का range bound guidance they have given last year. Now this year in the Q1 they have grown their AUM by 22%, which is 1% better than FY25 results. If we see the disbursement, this is the catchy number. Disbursement here grown at 32% का disbursement इन लोगों ने किया है। So this is positive thing about Aadhar Housing Finance. And if you look at the ROE trend, it is also on the वो जितना जितना स्पीड से डिक्लाइन हो रहा था, now that decline has seems to be moderating. 18.3% FY24, then FY25 15.9%, and now 14.7%. So slight decline तो है, बट इट्स काइंड ऑफ मॉडरेटिंग बेसिकली। ROA अगर आप देखोगे तो ये 4.3 से 4.4% काइंड ऑफ स्टेबिलाईज हो रहा है वहां पे। GNPAs आर स्लाइटली अप हियर, which is in line with what you have seen in the home first finance. That's it. So this is all about Aadhar housing finance. Aadhar housing में एक और अपडेट ये है कि वहां पे प्रमोटर्स चेंज हो रहा है। जैसे लास्ट क्वार्टर हमने देखा कि आवास फाइनेंशियर्स में जो जो केदारा कैपिटल था वो they actually exited this company, and now it's time for Aadhar housing finance. तो यहाँ पे I think BlackRock is taking entry here. So I'm not saying that BlackRock आएगा तो बहुत ज्यादा अच्छा कंपनी हो जाएगा। Anyways, we have to track this AUM growth here, but that is the news here basically. Yeah. So now if you compare all these companies जिन्होंने रिजल्ट पोस्ट किया है, तो उसमें अगर हम लोग देखेंगे तो होम फर्स्ट फाइनेंस इज लीडिंग द रेस विद 28% AUM का ग्रोथ, followed by Bajaj Finance, which is 24%, Aadhar Housing Finance 22%, Canfinome 9%. Now, still Home First Finance is a winner here because it is relatively growing better than its peer. But company to watch here is India Shelter Finance, because in India Shelter Finance they consistently grown at a 35% का rate. I'm more interested in seeing the results right now. Recently we've seen a small run हियर इन द स्टॉक। अभी अगर आप इसका प्राइस देखोगे ना, ये प्राइस बहुत ही ज्यादा स्टेबल था जब सब स्टॉक गिर रहे थे। तो इंडिया शेल्टर वाज होल्डिंग इट्स ग्राउंड एट अराउंड 870 880 के इसमें इट वाज होल्डिंग द ग्राउंड, एंड देन व्हेन ऑल कंपनी स्टार्टेड रनिंग देन इट हैज आल्सो शोन द रन अप टिल 1000 rupees. Now I am curious to see how they do in Q1 FY26, and
what guidance for the full year they have to give basically. So that will add the story into the landscape, और वो change भी हो सकता है यहाँ पे. तो keep a track on India Shelter Finance. So for me right now, these are the two winners, Home First Finance and India Shelter Finance. But India Shelter Finance story may change, may change post the Q1 FY26 if they post a bad number in relative to the other companies. So that is all about housing finance companies. So this